जब तक एक नेता विरोधी दल, एक प्रधानमंत्री और एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसमें मेंबर होंगे और जिनके द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी। आनन फानन में विधि बनाकर न्यायालय के जो न्यायाधीश की जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक कैबिनेट मंत्री रखकर इन्होंने इस बात का सुनिश्चित करने का काम किया कि चुनाव आयोग कठपुतली बनकर रहे और उसका जीता जाता उदाहरण आज देखने को मिला। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदया, मैंने स्वयं देखा है, मैंने बाई इलेक्शन देखा है। आप इस लोकतंत्र की खूबसूरती के चलते जो इन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया था, उससे प्रभावित होकर इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाना चाहिए। और अयोध्या मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं, पांचों पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके एक नया संदेश देने का काम किया था कि अब इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वहां उपचुनाव हुआ, मैं जिस सीट से जीतकर आया, मैं विधानसभा में सदस्य था। मैंने 45 वर्ष से 1980 से लगातार सक्रिय राजनीति में रहा हूं। मैंने 45 वर्षों में इतना भ्रष्टाचार, इतना बेईमानी और इतना जिस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया, मैंने कभी भी सरकार में देखने का काम नहीं किया। मेरी कटहरी विधानसभा क्षेत्र से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। मैंने देखा कि वहां पर डीएम, एसपी, ये सारे लोग मिलकर गांव-गांव में 2-2 सिपाही नियुक्त किए गए जो मतदाता सूची को छांटने का काम कर रहे थे, हमारे मतदाताओं को वहां से निकालने का काम कर रहे थे। इसके बाद से प्रधान और बीडीसी सदस्य, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी कातरी इसके से लेकर शिक्षा मित्र तक, उनको जो है प्रभावित करने का काम किया, धमकी देने का काम किया। डीएम स्वयं 25-30 गाड़ी लेकर जाता था बूथ पर, बूथ जांच के नाम पर, और उस तरह से बूथ जांच के नाम पर जिस तरह से वहां पर सभी को धमकी देने का काम करता था, उसको मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको भी हमने देखने का काम किया है। इस तरह से और बार बार शिकायत करने के बाद भी हमारे जो बूथ के एजेंट थे उनको धमकी दिया जा रहा था कि ये बाई इलेक्शन से सत्ता नहीं परिवर्तित होगी, इसलिए बूथ पर दिखाई न पड़ना। पुलिस वाले धमकी देने का, एक गांव से 28 गांव से मोटरसाइकिल लाकर सड़क थाने में बंद करने का काम किया जा रहा था। जिस तरह से वोट के लूट को देखा, इल्फातगंज एक टाउन एरिया है, 24 बैरिकेडिंग लगाकर हमारे मतदाताओं को निकलने का नहीं देने का काम किया। तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये सत्ता का और धन्ना सेठों का मिली भगत का चुनाव है। एक लोकसभा में 100 करोड़ 150 करोड़ चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है। जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। इसलिए मेरा जो सुझाव है, सबसे पहला सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहा हूं, ये तो ये सुझाव है कि स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची कॉमन बनाई जाए। किसी मतदाता का नाम शामिल होने के बाद केवल उसके मृत्यु पर या उसके द्वारा आवेदन करने पर कि हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तभी उसका नाम हटाने का काम किया जाए। सरकार के द्वारा कोई नई घोषणा चुनाव के 1 वर्ष पूर्व के बीच में न किया जाए या किसी तरह से डायरेक्ट फंड न दिया जाए। 1 साल कम से कम पहले से ऐसा करने का काम किया जाए। चुनाव आयोग की नियुक्ति में जैसा माननीय तिवारी जी ने प्रस्ताव किया है, उसके आधार पर करा जाए। चुनाव की उस खर्च की प्रतिपूर्ति स्टेट फंड से किया जाए। आज हम जैसे लोग, मैं माननीय महोदया, जब मैं पहला चुनाव 1991 में लड़ा विधानसभा का, मेरे परिवार के लोग आए, मुझे 500 रुपया केवल चंदा घर से दिया था, और उस 500 रुपए के बल पर मैंने आम जनता के सहयोग से लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से हमें पैसे की इंतजाम करना पड़ता है, तो इसलिए इसका फंडिंग स्टेट फंड से किया जाए, या तो चुनाव में मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स से मुक्ति करने का काम किया जाए। मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से, जैसे ही हमारी उम्र 18 साल होती है, ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है, और इसमें जो ये नियमावली बनी है 1950 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950,
इसमें इस बात का दिया गया है, हमारे संविधान में भी इस बात का है 26 में 326 में कि हमें इस आधार पर मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता या मतदाता सूची में अब हमारा नाम शामिल करने से रोका नहीं जा सकता कि हमने आवेदन नहीं किया है। हम 18 साल की उम्र के हो गए, हमारा नाम अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। दूसरा एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रामपुर में एक माता पर, एक महिला पर FIR हो गया। इसलिए FIR हो गया कि उसके बेटे विदेश में थे, उन्होंने SIR फार्म भर दिया। हमारी जो ये नियमावली है 20 का, इसके अनुसार ये दिया गया है कि अगर कोई बाहर रहता है, 21 का के परंतुकता के अनुसार कि अगर कोई बाहर भी रहता है तो उसका नाम, अगर वहां का वो नागरिकता नहीं हो गया, अगर वो विदेश का नागरिकता स्वीकार नहीं किया गया, तो इस आधार पर कि वो विदेश में नौकरी कर रहा है, यहाँ से नाम काटा नहीं जा सकता। उसका अनिवार्य रूप से जहाँ से उसका पासपोर्ट है वहाँ की मतदाता सूची में नाम रहेगा। इस तरह से अधिकारियों के बल पर केवल ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं तो अनिवार्य, इसके साथ साथ अभी हमें जानकारी मिली, जो ये मैपिंग कर रहे हैं, उस मैपिंग में 2003 से जो मैपिंग कर रहे हैं, एक ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। हमें सुनने में आया है कि वो मैपिंग करने वाली जो संस्था, उसको चयन किया गया है जिसने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड देने का काम किया है। इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो उसी तरह का है, नहीं है, यह इसकी हमें जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसी चर्चा सुनने में आई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूंगा कि हमें अगर लोकतंत्र को बचाना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग, मैं ऐसे परिवार से आया हूं, मेरे माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, हम शुद्ध किसान के लोग। आज अगर इस तरह की व्यवस्था रहती जिस तरह से आज पैसे का चलन हो गया, तो हम विधानसभा या लोकसभा में न आ पाते। आज अगर हम आने का काम कर पा रहे हैं तो इस कारण है कि हमारा लोकतंत्र उस समय मजबूत था। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत इसमें सुधार करने का काम किया जाए और निश्चित रूप से ये जो हमने सुझाव दिया है इसको माना जाए। धन्यवाद। अभी तो जीत के आए हो ना आप। श्री मिथुन रेड्डी, PV मिथुन रेड्डी। Thank you, sir. Elections are like the cornerstone of our democracy. The integrity with which the elections are being held is paramount. Sir, the elections should be held in the true spirit of the democracy. The elections process should be such that both the winners and losers should have complete trust in how the process has been done. So there have been a lot of doubts and a lot of issues, and like every other party, we represented to the Election Commission of India. Sir, there have been some issues which we have raised. I will just mention 2 or 3 issues which we have raised. In Andhra Pradesh, 3.38 crore votes were polled, sir. And the polling started at morning 7 o'clock until 6 in the evening. But after 6 o'clock, surprisingly, 15% of votes were recorded. That is, out of 338, 51 lakh votes were recorded. Never it has happened in the history of Andhra Pradesh, not even in 19, not in 14. So we are unable to understand how this sudden surge in voting happened after 6 o'clock. And similar complaint was there even in Orissa, sir. So we'd like to know how such things are happening suddenly. And in another instance, sir, whatever complaints, okay. In other, sir, there's another. Whenever we give complaints, sir, whenever we have given complaints, nothing has been done, sir. I'll just give an example. So in Vijayanagaram, in polling station 9 and polling station 4, our former MP gave a complaint, sir. He found that
during the day of the counting, the battery charge of the EVM was 99%. On the day of the polling, the battery charge was 60%. How did this how did the charge go up? We raised a complaint, there was no response. We asked for the CCTV footage of the strong room. It was not provided. We asked for the VVPATs. They said it had been burnt and destroyed. Sir, such is the thing. There was no response at all. And when we asked for verifying these particular EVMs, they said this particular EVMs will not be given for verification. Another set of EVMs were provided for verification. So such is the bad response we got from the officers. And there was no point in raising the complaint also. And mock polling was conducted on some other EVMs, not on the EVMs which we complained, sir. And there's one more peculiar issue I would also like to raise. For example, in Hindupur Assembly, there is one particular polling station, 28, where we had elections on the same day, sir, for the parliament and for the assembly. Sir, we polled 472 votes for parliament. Our party got in that particular booth. There we've been winning for the past 30 years, right from the local body elections to everything. And in the assembly election, we just got one vote, sir. We had 5 agents in the booth, and their family members itself constitute for 30 votes. We are unable to understand how for 472 votes we polled on the same day, same time for parliament, and for assembly was getting just one vote. So throughout the world, everybody is coming back to paper ballot. Sir, even the US president himself said we are coming back to the paper ballot from EVMs. 92% of all the US elections are happening on paper ballot. Even Elon Musk, who is himself an expert, he himself, a technical expert, sir, basically, he himself said that EVMs are easily, they can be hacked. And there are many countries which have come back, sir, from EVMs to paper ballot. For example, you see Netherlands. In 2006, 2007, they came back to paper ballot. There were like live demonstration on TV how they hacked the EVMs. And even in Germany in 2009, Germany also they came back to paper ballot, and even Ireland, even Paraguay, Finland, and our neighbor Bangladesh also has come back to paper ballot, sir. Sir, we also would like to draw your attention throughout Europe. If you take UK, Turkey, Sweden, all the developed nations who are well developed and who have very good technical capabilities, they are still using paper ballots. Sir. They doing this to dispel any doubts. Sir, our party has won with EVMs in 19 and we lost with EVMs in 24. My 3 elections we won with EVMs, sir. But still I have some doubts and I want to dispel these doubts. The government should act and take everybody's suggestion, and we should come back to paper ballots, sir. That is our request. And sir, we would like to make some suggestions. One is that we want the paper ballot system to be back. And the second point is, sir, we are okay with SIR or we are okay with any vote division, any process, as long as all sections of society are comfortable with it. And third, all parties should have access to webcasting, sir. There should be webcasting in all the polling booths, and webcasting should be accessible to any booth. The CCTV footage of any booth should be available to any party, and the election should be held in a transparent process. Thank you very much, sir. Shri Rahul Gandhi. Thank you. Thank you, Speaker, sir, for letting me speak on this really important matter. Speaker, sir, have you ever wondered why Mahatma Gandhi laid such emphasis on Khadi? Why was it that he framed the entire Indian freedom struggle around the concept of Khadi? And why is it that he only wore Khadi? Because Khadi is not just a cloth. Khadi
is the expression of the people of India. It is the imagination, it is the sentiment, it is the productive force of the people of Aaj Pehnaun Khadi. It is the expression of the people of India. Speaker Sir, whichever state you go to, you will find different fabrics. There's the Himachali cap, Assamese gamcha, Banarsi sari, Kanchipuram sari, Naga jacket, and you will find that all these fabrics represent the people. When the people of Assam give you the gamcha, they're not just giving you a piece of cloth. They're giving you an expression. They're giving you a piece of their history, their tradition, their future, their imagination. It's the same when the Nagas wear their jacket. When they come and see us, they make us wear the jacket because they want us to be embraced by the fabric. But Speaker Sir, these fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and you look closely at the fabric, you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram sari might have a golden thread, but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. The other thing to notice about the sari or any other fabric is that all the threads are equal. No one thread is superior to another thread. They all come together. The threads cannot protect you. The threads cannot keep you warm. But when they come together as a fabric, they can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker Sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Loksabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker Sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal.
Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ I'm doing, relax. मैं बुलाता हूँ, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। So, प्लीज sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े। Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खाती पैसे थे थोड़ा बता दे। So these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर, हम लोग सुनना चाहते हैं। सर, स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं।
मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं, अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है, सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। Should I leave? Then you speak. He wanted you. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the subject में नहीं आपके lobby. आपका lobby subject में नहीं. ये विषय कर रही है. The discussion, one second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए. एक मिनट बैठिए. माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture What is this? मानिए प्लीज मानिए। Yes, become tonight.
election, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I'm not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is remove the CJI. Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक, नहीं जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो। नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree
with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. कोयला उपलब्ध है और उसका कोयला का उत्पादन का 80% हम पावर प्लांट पर देते हैं और 20% ही अदर उद्योग फैक्ट्री को देते हैं और समय समय से डिमांड आता है उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और रहा बात वहाँ का विस्थापन का, तो उस पर लोकल प्रशासन वहाँ के राज्य का मुख्यमंत्री द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा पुनः सहयोग नहीं मिल पाता है पूर्ण ढंग से, जिसके चलते वहाँ लोकल में परेशानी है, पुनर्स्थापन करने में परेशानी हो रही है। श्री मल्लू रवि। स्पीकर सर, ओके, thank you, Speaker sir. I just want to know from the Honorable Minister whether the Coal India or SCCL has initiated any coal gasification pilot projects in the South Telangana region. If so, the details of such projects and their expected impact on cleaner industrial energy in Telangana. Whether the government proposes to include backward districts like Nagar Karnool under Mission Green coal regions. If so, the measures proposed for environmental restoration and community benefit in these regions. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अब केवल कोल जला के ही When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app or website. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. Check out the difference between this same sentence being dictated into Siri versus Whisperflow. Let's meet at 12 p.m. at Joe's Pizza. Wait, no, actually I can't do 12, so let's do 12:30. And instead of Joe's, let's go to Kelly's Diner. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. For longer texts like this email, they even formats it professionally so it's ready to go with no editing. So much faster than typing. Whether you're writing in Gmail, ChatGPT, iMessage, WhatsApp, Slack, Cursor, or anywhere else, break free from your keyboard. Do you know how much time you'll save if you quadruple your typing speed? Try Whisperflow for free on desktop and mobile. सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष श्री, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष श्री, विश्व आज एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। विकसित देश भी सुरक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में खतरे में है। तब भारत पूरे विश्व में एनर्जी सरप्लस बनकर मजबूती से खड़ा है। माननीय अध्यक्ष श्री, विश्व में भारत के पास कोयला भंडार चौथे नंबर का था, लेकिन 11 साल पहले ऐसा क्या मजबूरी था जो भारत विश्व के अन्य देशों पर निर्भर था। आज भारत मजबूती से खड़ा है। 11 साल पहले पॉलिसी पैरालिसिस था, 11 साल पहले
कोयला घोटाले का समाचार हम सुनते थे, लेकिन आज हमारे विश्व में वैश्विक नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सरप्लस बन के पूरे भारत आज विश्व में खड़ा है। इसके पीछे का कारण ये हमारा कमिटमेंट भी रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताते हुए गर्व होता है कि G20 देशों में जो क्लीन एनर्जी का कमिटमेंट है, एकमात्र भारत देश उस कमिटमेंट को। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि कोल कंपनियां जो सोलर एनर्जी में काम करती हैं, तो उनका लक्ष्य क्या है और कितना पैसा खर्च कर रही हैं? ओके, अभी आप सदस्य हो, मंत्री ये जवाब देंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को बताना चाहते हैं कि अब कोल कंपनियां केवल कोल से ही बिजली नहीं बना रही है, सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा रही है। जैसे आप नवेली कॉरपोरेशन 2019 में ही 1 गीगावाट सौर ऊर्जा प्लांट से बिजली तैयार करके देश को समर्पित कर दिया है। और चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे नवेली कॉरपोरेशन हो, दोनों का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर हम सौर ऊर्जा केवल कोल पर आधारित नहीं रहे, हम अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पे भी आधारित बिजली तैयार करें और देश को स्वच्छ रखने में एक मजबूती प्रदान करें। और 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, हम आत्मनिर्भर भारत बने, उसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से, पवन ऊर्जा के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए आगे चल रहा है। आज मंत्री जी आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, राज्य मंत्री को अच्छा जवाब दे रहे हैं, अप्रिशिएट। क्वेश्चन नंबर 142 श्री गोडम नागेश। सर, क्वेश्चन नंबर 142 सर। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, सभा पटल पर इस प्रश्न का उत्तर रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने सविस्तार से उत्तर दिए। अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना है कि रेलवे स्टेशन हॉल्ट्स बहुत सारे ये हैं, तो वहाँ का मिनिमम एसेंशियल